गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है न्यू ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 साल की नेगोशिएशंस के बाद WHO मेंबर स्टेट्स ऑफ कोर्स एक्सेप्ट यूएस एक ड्राफ्ट पर एग्री करे हैं लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाने के लिए, जो कि ग्लोबल प्रिपरेडनेस और रिस्पांस जो है वो इम्प्रूव करेगी फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए। तो ये ट्रीटी जो है वो रेटिफाई होने वाली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा इन द मंथ ऑफ मे, और ये सेकेंड लीगली बाइंडिंग अकॉर्ड होगा WHO की हिस्ट्री में। पहला कौन सा था? टबैको कंट्रोल ट्रीटी 2003 में जो बनाई गई थी। तो जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया 2021 में, वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने वैक्सीन डोजेस को होल्ड करना शुरू कर दिया, और लो इनकम नेशंस जो है उनको कोई एक्सेस नहीं मिला वैक्सीन का। तो इससे जो है हमारे को डीप ग्लोबल इनिक्विटीज़ जो है वो सामने आई पैंडमिक रिस्पांस में। 2022 में एक स्टडी भी हुई कि अगर जो है सही टाइम पर फेयर वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती तो लगभग 1 मिलियन लाइव्स बचाई जा सकती थी। 2021 की रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि पुअर स्ट्रेटजिक चॉइसेस की और इनइक्वालिटी और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, एक पैंडमिक जो है उसको मेजर ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर बना दिया गया। तो इन फेलियर्स को देखते हुए WHO मेंबर स्टेट्स ने एक नेगोशिएट करना शुरू किया एक पैंडमिक ट्रीटी को दिसंबर 2021 में, और लगभग 13 राउंड्स ऑफ टॉक्स के बाद और लगभग 3.5 साल के बाद एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट रीच किया गया बेटर प्रेपरेडनेस, इक्विटी और कोऑर्डिनेशन के लिए फ्यूचर पैंडमिक्स में। तो ये ट्रीटी जो है वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है जहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि साइंटिफिक डेटा जैसे पैथोजन सैंपल्स या जीनोमिक सीक्वेंसेस गेन करती हैं पब्लिक फंडिंग पर, उन्हें एक कमिटमेंट देनी होगी कि वो जो वैक्सीन या ड्रग या डायग्नोस्टिक्स बनाएंगी वो पैंडमिक के टाइम पर इक्विटेबली शेयर किया जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस एग्रीमेंट में, उन्हें 10% जो पैंडमिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे वो WHO को फ्री में देने होंगे, और बाकी के 10% जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पर देने होंगे। मेंबर स्टेट्स का कहा जा रहा है कि वो एनकरेज और इंसेंटिवाइज करे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ, और बाकी की डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी। कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगी जिससे कि कोई भी तरह की पब्लिकली फंडेड रिसर्च जो है वो इक्विटेबल और इक्विटेबली जो है वो रिसर्च जो है वो शेयर की जाए ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। तो ये ट्रीटी जो है गवर्नमेंट्स को भी एम्पावर करेगी कि वो लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाते टाइम इंटरवेन करें, डेवलप करें उसे यूजिंग पब्लिक फंड्स, और अनअफोर्डेबल जो अनएक्सेसिबल सिटीजन्स या वल्नरेबल पॉपुलेशन है उन्हें भी इसका एक्सेस दिया जाए। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी का कि WHO के पास कोई लीगल पावर ही नहीं है इंडिविजुअल कंट्रीज़ के ऊपर ऐसी कोई ट्रीटी को इन्फोर्स करवाने की। WHO के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं है कि वो इसकी कंप्लायंस इंश्योर करे। फार्मा लीडर्स का कहना है कि अनक्लियर रूल्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बेनिफिट शेयरिंग में, इससे जो है डिस्करेज होगी इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क पैंडेमिक रिसर्च पर। तो कोई इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस भी नहीं है इस ट्रीटी पर कि कैसे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। और ऊपर से सबसे बड़ा जो मेजर प्लेयर है वैक्सीन और ड्रग प्रोडक्शन में US, वो भी इस ट्रीटी से ही गायब है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 1972 शिमला एग्रीमेंट। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान ने जो शिमला एग्रीमेंट है इंडिया के साथ उसे सस्पेंड कर दिया है। तो ये एक कॉर्नर स्टोन था बायलैटरल डिप्लोमेसी का 1971 की वॉर के बाद, जो एक डिप्लोमेटिक रिस्पांस था। 1972 में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके बीच में ये साइन हुआ था शिमला एग्रीमेंट, जिसकी वजह से बाद में ऑफ कोर्स इवेंचुअली क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुआ। तो ये इस ट्रीटी में जो है शिमला एग्रीमेंट में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात होती थी कि मतलब हम अपने कन्फ्लिक्ट जो है वो आपस में ही सुलझाएंगे, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगा, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में, और कश्मीर जैसे इशू को भी जो है इंटरनेशनल इंटरवेंशन के बिना ही जो है रिजॉल्व किया जाएगा। तो LOC जो है सीज़ फायर लाइन जो 1971 वॉर की जो थी उसको जो है डी फैक्टो उसको LOC में कन्वर्ट करके एक डी फैक्टो बाउंड्री बना दिया गया जम्मू कश्मीर में। इंडिया ने रिटर्न कर दिया 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी जो कि वॉर के टाइम पर कैप्चर हुआ था। ऑफ कोर्स डायरेक्ट पार्टी तो नहीं था, बट इसके वजह से इवेंचुअली डिप्लोमेटिक रिकग्निशन भी दिया पाकिस्तान ने बांग्लादेश को। इस एग्रीमेंट ने बोथ कंट्रीज़ को जो है फिक्स किया कि वो UN चार्टर की रिस्पेक्ट करेंगे अधेयर करेंगे उनके प्रिंसिपल्स को। अब पाकिस्तान ने डिसीजन इसलिए लिया है कि वो जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है उसके एब्रोगेशन के बाद वो एक तरह से दिखाना चाहता है कि हम ये अब इस एग्रीमेंट को नहीं मानते। पाकिस्तान को अब ये
इस बायलैटरल फ्रेमवर्क से डिस्टेंस होने में हेल्प होगा और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वो इनवाइट कर सकेगा। तो डिप्लोमेटिक लीवरेज वो इंटरनेशनलाइज करके कश्मीर के इशू को गेन करने की कोशिश करेगा। स्ट्रेटजिक रिकैलिब्रेशन होगा, मतलब कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी प्रेशर्स जो है उनके ऊपर, वो अब सारा फोकस अपना इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो पाकिस्तान अपना कर देगा। ठीक है, एलओसी जो है वो बहुत वॉलेटाइल भी रही है। तो शिमला एग्रीमेंट जिसने कि कोडिफाई किया था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर एलओसी को, वो एक टेंशंस को डी एस्केलेट करने का फ्रेमवर्क बन चुका था। लेकिन प्रॉब्लम यही है, किसी भी तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट, आप सिर्फ शिमला एग्रीमेंट ही नहीं बट किसी भी तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो बाइंडिंग कमिटमेंट के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि देयर इज़ एनआरकी इन इंटरनेशनल अफेयर्स। कोई भी कंट्री अगर बैक हो जाती है किसी भी एग्रीमेंट से तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। कोई शेयर्ड एग्रीमेंट की एब्सेंस है इसमें। ठीक है, तो कुछ इसमें कुछ किया नहीं जा सकता अगर पाकिस्तान इसको इससे बैक ऑफ हो जाता है तो। पाकिस्तान जो है वो इसकी सस्पेंशन को यूज़ करते हुए थर्ड पार्टी मीडिएशन भी करवाएगा। हिस्टोरिकली इंडिया ने एम्फेसाइज़ किया है बायलैटरलिज्म, फॉरेन इंटरवेंशन के बिल्कुल खिलाफ हैं, खासकर जो डिस्प्यूट्स हैं पाकिस्तान के साथ उसको रिजॉल्व करने में। इस सस्पेंशन से जो है वो मीनिंगफुल डायलॉग की स्पेस और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि अब पाकिस्तान जो है वो थर्ड पार्टी मतलब यूएस या चाइना ऐसी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एग मेयोनीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1 साल का बैन लगा दिया है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ मेयोनीज़ पे, जो कि रॉ एग से बनती है। तो मेयोनीज़ जो है वो सेमी सॉलिड एमल्शन है जो कि एग योक, वेजिटेबल ऑयल, विनेगर, सीजनिंग से बनाया जाता है। तो इसमें ऑयल को एक एग योक्स को सीजनिंग्स और के साथ और ऑयल के साथ मिक्स करके एक थिक पेल येलो सॉस बनाया जाता है। उसमें बाद में एक एसिड डाला जाता है, कभी कभी विनेगर होता है वो। तो ऑफ कोर्स ये मेयोनीज़ जो है वो फ्रांस और स्पेन में यूज़ की जाती थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा फास्ट फूड में ग्लोबली यूज़ की जाती है। तो आप सैंडविचेज़ या बर्गर्स में आप देखते होंगे इसको बहुत यूज़ किया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि रॉ एग्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स जो वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है वो एक अलग चीज़ है, बट रॉ एग्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं। जब तक आप उसको कुक नहीं करते तब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो मेयोनीज़ में जब ये रॉ एग्स ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो ये पैथोजेंस एक्टिव रहेंगे, हेल्थ रिस्क पोज करेंगे। तो रॉ एग बेस्ड मेयोनीज़ जो है वो एक हाई रिस्क फूड होता है, क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन बाय बैक्टीरिया बहुत ही जो है वो कॉमन रहता है, जैसे सैल्मोनेला या ई कॉली। चिल्ड्रन, एल्डरली या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स जो है वो काफ़ी रिस्क पर होते हैं इस बैक्टीरिया से। एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी इस बैन को सपोर्ट करते हैं। मेयोनीज़ जो है वो एक कॉमन इंग्रेडिएंट बन चुका है अर्बन इंडियन फास्ट फूड में, और फूड बिजनेस जो है वो एगलेस या पेस्चराइज एग ऑल्टरनेटिव्स को अगर यूज़ करें तो उसको तमिलनाडु ऑफ कोर्स पुश कर रहा है। तमिलनाडु ऐसी पहली स्टेट नहीं है जिसने ऐसा बैन लगाया। तेलंगाना ने भी ऐसा 1 ईयर का बैन जो है एग बेस्ड मेयोनीज़ पर नवंबर में लगा दिया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिसेंटली जजमेंट में कहा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग होता है वो ऐसे ही नहीं यूज़, रूटीन मैनर में नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। उसको बिल्कुल जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता कि ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए हैं कि ये लगाना चाहिए, तब ही सिर्फ इसका यूज़ किया जाना चाहिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या होता है? कोर्ट्स जो हैं वो लीगल डिसीजन सिर्फ फ्यूचर केसेस पर ही अप्लाई करें और पास्ट एक्शंस या जजमेंट जो ओल्ड लॉ के टाइम पर लिए गए हैं उनको जज ना करें या उसको चेंज ना करें। इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। तो आप जो रेट्रोस्पेक्टिव जजमेंट देखते हो या रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग्स देखते हो उसका ये ऑपोजिट है। इंडिविजुअल्स या एंटिटीज़ जिन्होंने प्रीवियस लीगल रूल के हिसाब से एक्शन लिया था उनको कोई पेनल्टी ना लगे, इसके लिए प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग होता है। तो सबसे पहले इसको अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस में रिकग्नाइज़ किया गया था, बाद में कंट्रीज जैसे इंडिया और यूके ने भी इसको अडॉप्ट किया। इंडिया में इसको सबसे ज़्यादा जो है वो बल मिला सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केस जो सी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था। और पूरा पर्पज़ इस डॉक्ट्रिन का ये होता है कि ओल्ड सेटल्ड इशूज़ को ओपन ना किया जाए, रीओपन ना किया जाए और मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को प्रिवेंट किया जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सार्क वीज़ा एग्जाम्शन स्कीम। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं उन्हें सार्क वीज़ा एग्जाम्शन स्कीम के अंदर जो है वो इंडिया में ट्रैवल करने को नहीं अलाउ किया जाएगा। तो ये वीज़ा स्कीम 1992 में लाई गई थी कि जो डिग्नेटरीज़ हैं सार्क कंट्रीज़ के उनको एक स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिले, उनको वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े एक दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल करने को सार्क कंट्रीज़ में। तो 24 कैटेगरीज ऑफ एंटाइटल्ड पर्सनस होते हैं इसमें, जैसे डिग्नेटरीज़ हो गए, जैसे जजेस,
पार्लियामेंटेरियन, सीनियर ऑफिशियल, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सनस। तो ये वीज़ा स्टिकर्स जो है वो रिस्पेक्टिव मेंबर स्टेट्स को द्वारा इशू किए जाते हैं एंटाइटल्ड कैटेगरीज को ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। वैलिडिटी इस वीज़ा स्टिकर की लगभग 1 ईयर की होती है। इसको रेगुलरली रिव्यू किया जाता है बाय इमिग्रेशन अथॉरिटीज़। सार्क क्या है? एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया का। सेक्रेटरीट इसका काठमांडू में है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका इसके मेंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मीजल्स एंड रुबेला वैक्सीन। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज, गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन जो है वो अचीव करना चाहता है 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज, 2 डोज ऑफ मीजल्स रुबेला वैक्सीन देकर सभी चिल्ड्रंस को। तो मीजल्स क्या है? एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ जो कि प्राइमरीली अफेक्ट करता है यंग चिल्ड्रन को। इसकी वजह से सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। एक एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस से ही होता है। तो इसमें कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे ब्लाइंडनेस, एंसेफेलाइटिस, सिवियर डायरिया, ईयर इन्फेक्शंस, निमोनिया। तो ये स्प्रेड होता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और ये वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डेथ्स है ग्लोबली। रुबेला क्या है? जर्मन मीजल्स, एक माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है जो प्रिडोमिनेंटली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स को। कॉज्ड होता है ये बाय रुबेला वायरस। ये एज़ कम्पेयर टू मीजल्स कम इन्फेक्शियस है या फिर माइल्ड है, लेकिन फिर भी एक मेजर रिस्क होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इससे इरिवर्सिबल बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे डेफनेस, हार्ट डिफेक्ट्स या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ओके, सो नाउ लेट्स सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is new global pandemic treaty. This topic is important for your social issues and your international relations. So after over 3 years of negotiations, WHO member states have agreed on a draft of a legally binding treaty which aims to improve global preparedness and response to future pandemics. So of course US is absent from this treaty. This treaty will be ratified at the World Health Assembly in the month of May, and it will be the only second legally binding accord in WHO's history. First one was 2003 Tobacco Control Treaty. This is an important point. If an exam question comes regarding this particular topic, this point will be definitely covered in that. Okay, so when the Omicron variant surged in 2021, vaccine producing countries started hoarding the doses, leaving low-income nations with limited or no access. So this highlighted deep global inequities in pandemic response. Even a 2022 studies estimated that over 1 million lives could have been saved if the vaccine distribution was fair. Similarly, a 2021 report also blamed poor strategic choices, inequality, and lack of coordination for turning the pandemic into a major humanitarian disaster. In response to these failures, WHO member states began negotiating a pandemic treaty in December 2021. And after 13 rounds of talks that lasted over 3.5 years, a draft agreement has been reached to ensure better preparedness, equity, and coordination. So, what are the key provisions of this treaty? This treaty is introducing a system where pharma companies who have access to scientific data like pathogen samples and genomic sequences, they will have to give a commitment to equitably share the resulting vaccines, drugs, and diagnostics during a pandemic. Apart from that, of course, the manufacturers who are participating in this agreement, they have to allocate 10% of their pandemic related products to WHO free of charge, and an additional 10% at affordable prices. Member states who are expected to encourage and incentivize the transfer of technology and know-how so as to enable developing countries to manufacture their own medical tools during pandemics. Countries must also create policies which require any publicly funded research, whether at universities or private companies, to ensure equitable and timely access to resulting treatments or diagnostics during public health emergencies. So this treaty also empowers governments to intervene when life-saving medicines developed using public funds are unaffordable or inaccessible. Okay, but there are certain criticisms of this treaty as well. So while this treaty is considered as a major step forward, it does not grant the WHO any legal power over individual countries. WHO has no power to ensure compliance as well. Okay, pharma leaders are also arguing that unclear rules around intellectual property and benefit sharing also may encourage investment in high-risk pandemic research. The pathogen access and benefit sharing system, which is central to this treaty, also lacks any detailed implementation guidelines, raising concerns about its practicality and effectiveness. And there is also the biggest problem is that the US, which is the major player in vaccine and drug production, has already withdrawn from the negotiations after Trump's return to power. Okay.
So in the absence of US, the treaty's impact could be minimal. So the next topic is 1972 Shimla Agreement. This topic is important for your international relations. So Pakistan has suspended the 1972 Shimla Agreement as a reaction against stringent measures taken by India. So this agreement was long seen as a cornerstone of bilateral diplomacy between the two countries. Pakistan's unilateral withdrawal has signaled a departure from this framework and may reopen old hostilities. So it was signed in 1972 by Indian Prime Minister Indira Gandhi and Pakistani President Zulfikar Ali Bhutto, and this was a diplomatic response to the 1971 Indo-Pak War, which led to the creation of Bangladesh. So this treaty aimed to restore peace and normalize bilateral relations, and it established key principles for future engagement. First, for example, both nations committed to resolving conflicts bilaterally and refraining from third party mediation. Each side was to respect the territorial integrity and political independence of the other. The agreement also explicitly prohibited any interference in each other's internal affairs, and issues like Kashmir were to be resolved without any international intervention. So, what are the key provisions and outcomes? Ceasefire line from the 1971 war was converted into the LOC, which is a de facto boundary in Jammu and Kashmir. India returned over 13,000 square kilometers of Pakistani territory, which was captured during the war. While not part of the agreement directly, it paved the way for Pakistan's eventual diplomatic recognition of Bangladesh. The agreement reaffirmed both countries' adherence to the principle of the UN Charter. So Pakistan's decision appears to be a reaction to India's domestic measures, particularly those concerning Jammu and Kashmir. Okay, like the abrogation of Article 370. This suspension also allows Pakistan to distance itself from the bilateral framework, possibly to seek third-party intervention. So it also would allow Pakistan to reclaim diplomatic leverage by internationalizing the Kashmir issue through forums like the UN or OIC. It also signals strategic recalibration amidst the domestic and political pressures or security pressures in Pakistan. So we know that LOC has been historically volatile, but the Shimla Agreement uh, had codified the mutual respect for LOC, and it provided a framework to de-escalate tensions. For example, but the framework is now in question. Why? Because any international treaty, let alone the Shimla Agreement, they do not have any binding commitment because the world rules on anarchy. There is no one policeman or there is no one government or single government in the world that can uh, or which can impose the laws. Okay, so without a binding commitment, there is risk of increased skirmishes and military escalation. There is also absence of a shared agreement, which removes a key diplomatic restraint. Pakistan may use the suspension to justify third-party mediation, which is a stance that India opposes. As of now, India has not issued any official response. India has emphasized bilateralism, rejecting foreign intervention in its disputes with Pakistan. The suspension of Shimla Agreement could further shrink the space for any meaningful dialogue, at least in the near term. So the next topic is ag-mayonnaise. This topic is important for your social issues and also your uh, environment section. So Tamil Nadu government has imposed a 1-year ban on the manufacture, storage, distribution and sale of mayonnaise, which is made with raw eggs. So mayonnaise is a semi-solid emulsion from egg yolk, vegetable oil, vinegar, and seasonings. And these egg yolks and seasonings are mixed with the oil to form a thick pale yellow sauce. And then an acid is added to it, like lemon juice or vinegar. So its origins can be traced to France or Spain, but mayonnaise is now widely used in fast food globally. So raw eggs. Why this raw eggs based mayonnaise has been banned? Raw eggs carry harmful pathogens which are normally destroyed during cooking, but in mayonnaise these raw eggs are used and these pathogens remain active, posing health risks. So Tamil Nadu government has noted that raw egg based mayonnaise is a high risk food, and improper preparation and storage increases the likelihood of contamination by bacteria like salmonella and E. coli. Children, elderly, immunocompromised individuals are especially at high risk of illness from these bacteria. Experts also support the ban, stating that although mayonnaise is energy dense, using raw eggs can expose consumers to salmonella. Mayonnaise has become a common ingredient in urban Indian fast food, but this ban will likely push food businesses to use eggless or pasteurized or egg alternatives. Tamil Nadu is not the first state to impose such a ban. Telangana had also already enforced a similar one
year ban on egg-based mayonnaise in November. So the next topic is doctrine of prospective overruling. This topic is important for your polity section. So Supreme Court in its recent judgment has emphasized that the invocation of doctrine of prospective overruling to a decision must not be resorted to in a routine manner without the court satisfying itself that the circumstances demand such a solution. So what is doctrine of prospective overruling? It allows courts to apply legal decisions only to future cases without affecting past actions or judgments made under the old law. So this doctrine also ensures that individuals or entities who acted in reliance on a previous legal rules are not penalized. It contrasts with the retrospective rulings. Basically, it is the opposite of retrospective law. So this doctrine was first recognized in American jurisprudence and has been adopted in countries like India and UK since then. So this doctrine of prospective overruling was introduced into Indian jurisprudence by the Supreme Court in the landmark C. Golaknath versus State of Punjab case. The whole purpose of this doctrine is to avoid reopening of the settled issues and also prevent multiplicity of proceedings. So the next topic is SAARC visa exemption scheme. This topic is important for international relations. So Indian government has recently announced that Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme. This scheme was launched in 1992, and under the scheme, certain categories of dignitaries from SAARC countries are issued a special travel document which exempts them from the need for visa and other traveling documents to travel to these countries. This list also includes 24 categories of This list includes 24 categories of entitled persons like judges, parliamentarians, senior officials, businessmen, journalists, sports persons. So these visa stickers are issued by the respective member state to the entitled categories of that particular country. The validity of the visa sticker is generally for 1 year, and the implementation is reviewed regularly by the immigration authorities of SAARC member states. What is SAARC? It was established in 1985. It is an economic and political regional organization of countries in South Asia. The secretariat of it is located in Kathmandu, and the member states include Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. So the next topic is measles and rubella vaccine. This topic is important for your governance section. Measles rubella elimination campaign aims to achieve 100% immunization coverage by administering 2 doses of this vaccine to all eligible children. Measles is a highly contagious viral disease which primarily affects the young children, and it can lead to serious complications or death, even especially in malnourished children or those who have weak immunity. It is caused by an enveloped single-stranded RNA virus. The common complications include blindness, encephalitis, severe diarrhea, ear infections, and even pneumonia. It spreads through respiratory droplets, and it remains one of the leading causes of vaccine-preventable deaths globally. So, what is rubella? It is German measles. It is a mild viral infection which predominantly affects children and younger adults. It is caused by the rubella virus, and it is less infectious and milder than measles, but it still poses a major risk during pregnancy. For example, it can cause irreversible birth defects like deafness, heart defects, and intellectual disabilities. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.